Hello. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. नहीं. Good evening, sir. नहीं पिला के जॉइन कर लेंगे मैडम. Uh, हम so ସାର୍ joining ki କହୁଛନ୍ତି join ହେଇଛନ୍ତି? ଜଣେ ହଁ ତାହେଲେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ. Okay, okay, okay. ठीक ଅଛି. Hello, Yes. Hello. good evening. Sarita କହୁଥିଲି, Sarita Patra. Okay, 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 okay. Hi, good evening. So let's do one thing. Let's start the class for today. Yes. Uh, Okay. See, for this unit, you have 17th and 18th century British poetry, right? So today, I think in the last class, we have discussed most of the things. We discussed Alexander Pope, we discussed John Dryden, we discussed what else do you have? John Milton, and then again we also discussed Duchess of Malfi. So what I'm going to do today is I will just give you an overview about the uh, features of the poetry that were being written in 17th and 18th century. Okay, so I think I have told you before how much history is important in order to know literature. Yes, I mean, I keep repeating myself every day that the one thing that you should do even before reading any hardcore literature, just go through the history. Every age is important. Yes. Now, if you have gone through history of Anglo-Saxon period or Anglo-Norman period, and any other, after that, Renaissance, Elizabethan, Puritan, so you will know that every age has some distinct features. Okay, every age they have some distinct feature. Okay, the writers, they have their own creativity, they have their own ideas, they have their own values, they have you know their own perspective, their own angle, um, in which they look at a society. Okay, now if we talk about 18th century, if we talk about 18th century in particular, uh the poets of 18th century, what they tried to do is they tried to imitate the writers from ancient times. Okay, from ancient times, as in from the classical times, right? Like Horace, Sophocles, Euripides, Homer. All right. Have you heard of Homer and Euripides and Sophocles? Have you heard of them? Aristotle. Yes? Okay, anyways. So, what these writers they try to do? They try to imitate all these writers. Okay, because they thought that if we imitate those writers, then our poetry will be very much different than all the other poets that they have, than the other poets who have produced n number of poems. Okay, so they thought that the poetry or the literature of classical age or of ancient times, they were grand, they were sublime, they were writing about epics. Okay, like in India we have epics like Mahabharata, Ramayana, and so many things. So in fact, in Western countries they have epics like Odyssey, Iliad. Yes, and all those classical writers were writing on these epics, and they had a really grand way of uh, you know um, putting some things. So they thought the
poets of 18th century, they thought that only their way was the best way. Okay, the way the ancients were writing, that was the best way. And the even the letters were difficult, the vocabularies were difficult. Okay, if we read, if in today's time, if we try and read the classical text, it will take us quite some time to understand even a single line. All right. So they thought, that is the best way of writing. We should, have some uniqueness. Our poetry should be so difficult. Our poetry should be really challenging, even for a common man to read. All right. So they decided to imitate the ancients. Okay, to copy the ancients. Yes, and that is why they were also called neoclassicists. What do you mean by neoclassicists? Neoclassicists means new classical writers. Okay, new classical writers. They were also called as pseudo classical writers. Okay, pseudo classical writers, because there were some poets, um, they didn't like neoclassicists, they didn't like pseudo classicists. They thought that they are just trying to imitate the ancients, but they are then they are failing at their job. They are not able to imitate the classical writers that efficiently. All right. So when we talk about the poetry, or any writing during that particular age, especially poetry, you will see that their poetry is very much different. The poetry that they write, you will find that the writers or the poets, they put they give attention to the vocabularies. Okay, they will give attention to the vocabularies, they will give attention to the metrical composition. Okay, the metrical scheme, the rhythmic scheme. Okay, and all different poetic structures. All right. So when you read an 18th century poetry, you won't feel too much connected to it. Yes, because we have an idea that you know in order to study poetry, poetry is something to which you should be able to connect emotionally with it. Okay, you should be able to connect emotionally with a poetry. Okay, that is a beautiful kind of a poetry. But the 18th century poets, what they did, they decided that we shouldn't have any kind of emotion in our poetry. What we will do, we will put in logic, we will put in reason. Okay, our English should be at par, the vocabulary should be at par. Okay, our metrical scheme should be beautiful, our metrical scheme should look, it should sound beautiful. All right. So what they did, they paid attention to the outer beauty of a poetry, not not the inside beauty of a poetry. Like, they didn't pay attention to the emotional aspect of a poetry. They didn't, they didn't pay any heed to the common people who might read that poetry in future. They only focused on a set of community, on a set of a section of society that was literate or that belonged to aristocratic family. Okay, not everyone was efficient in you know in not everyone was efficient to understand that kind of powerful words. Okay, that kind of sublimity, that kind of grandeur. It was just a children, or it was just the aristocratic family who could understand it. Okay, therefore, these poets, they mainly focused, they only targeted the aristocratic family. Okay, and their children, and the ones who are going to the to the
different universities like Oxford and Cambridge were established in 11th and 13th century. All right. So, and the poetry, as I told you, the poetry was mainly, dedicated to reason. They will always put in logic. There were no feelings, no emotions, nothing. In fact, before that, I think I have discussed Milton yesterday, and I was saying that Milton was writing about religious things. Yes, Milton was writing about Bible. Milton was writing about Adam and Eve, about Satan, about Jesus, about the God, and how God he dismissed Adam and Eve from his paradise because Eve and Adam they made a punishment. They committed a punishment of eating that forbidden apple. Okay, so basically, what was Milton doing? Milton was showing the way of the God towards the man, how God behaves or how God helps a man. Okay, if we are in a certain situation, then that is, all because of Adam and Eve and all because of God. Adam and Eve they committed a crime and God punished him, and the reason behind that crime was Satan, the Lucifer. So what he was doing, that he was writing about all these religious things, because I told this that during Puritan age religion was very much rampant. People were very conservative, very orthodox. They thought that religion is everything. They thought that God was everything, and we all human beings, we are sinners. Okay, we are sinners, and we should always surrender in front of God. All right. So, therefore, what they did, they only focused on religion. Now, when these 18th century poets, when they came, they said that no, they said that we should also put in some logic. We should not be that emotional. We should give some logical argument to every question. Okay, we should give some logical argument to every question, something that your brain will understand, something that your brain will be able to calculate. There is always something as a cause and effect thing. Okay. And they also came up with the concept of Dadaism. Okay. And what was that? They said, as I told you that before that, the people, they believed in religion so much that they even couldn't, they couldn't think of anything other than God. Okay. Now, what these 18th century poets they said that yes, God is there, God is present somewhere there, but then God has given us our own individuality. God has given us our own brain. Okay, so God is not interfering in our decisions. All right, like if we have taken birth on this earth, then till the day we die, okay, till the day we die, we should do what our heart wants, we should do what our mind says, we should do our own will. Okay, we should be able to understand the difference between right and wrong, the difference between day and night, the difference between black and white. We should be able to understand what are the moral values, what are our limitations, what are you know um, where we should uh, how we should act, and what to do and what not to do. So he says that it's on us, it's on us humans to decide how we should lead our lives. They say that God is there, but God is not interfering in our lives. He gave us our life. Okay, He gave us a brain and everything. Now He is not interfering. All right.
So this is something the 18th century poets, they were adopting. They were adopting this idea or this concept that God is, yes, God is somewhere there, but God is not interfering anymore. All right. So you will see the poetry, or the 18th century poetry, they are not too much on religion, or they are not, and yes, and during that time science was also, mm, there were some other things that were being uh, uh, discovered, due to which, the people, they were confused as to what to believe in. Should they believe in religion, or should they believe in science? Because science and religion, they are always at two extreme poles. Okay, when religion says something, science will, what the science will do, science will put in logic, science will put in reason, science will do all those experimental things, and there will be some proof. And then when the proof comes out, when a theory comes out, that is absolutely opposite to what the religion says. So people were, people during that time, they were confused as to what to believe and what not to believe. There were some people who were losing faith in religion, because they thought that if God is there and we are repenting everything, we are surrendering ourselves, then why so many wrong things are happening to us? All right. So what they were doing, they were, they were in a constant state of confusion. You know, this is something that you will find even in the other ages, in other ages, like romantic age and Victorian age, modern age, postmodern age. This is a really relevant theme of history of English literature. Okay, so if you are going through history of English literature, especially of these ages, make sure you learn about religion versus science. How some people were inclined towards religion, some people are inclined towards science. And as we know, when we talk of science, we are always logical, we are always doubting, we are always in a state of doubt, we are always questioning, and that is what people were doing. And that is something, that is exactly what 18th century poets were doing. All right, did you understand, Sarita? Yes. Okay, so this age, it was also called the age of reason. Now, now you know why this age was called the age of reason. Okay, this was called a classical age. You know why it was called a classical age? Because people, the poets, they were trying to imitate the classical writers. And why it was called the age of reason? Because people were so much into reasoning, they were into intellect, they were into rationalism, and they had no place for sentimental things, they had no place for emotional things, and there were no place of imagination as well. Okay, they were not so too much imaginative about things. All right. And you know I told you, the uh, during this time, when Dryden and Pope, when they came, they were also, they were using satire in their poetry to attack on people. Okay, like yesterday I was saying that, the history of English literature, you will find different political parties, they were coming up at, yeah, and they were absolutely against each other. One political party was supporting the royals, and another political parties were supporting the common people.
Okay, so and since the ones who were supporting the common people, or let's say the parliament, the ones who were supporting the parliament, the royalists or the poets who were in support of the royalists, they will ridicule at the supporters of parliament, and the supporters of parliament will ridicule at the supporters of royals, and they will what they will do in order to ridicule, they will write a poetry, they will write a piece of work that will make fun of the other party. And what is the purpose of satirizing someone? What is the purpose of satirizing someone? The purpose was to ridicule and to correct that flaw. Like if someone sees that there is a flaw in that society, then what they will do, they will try to correct it. How will they correct it? By making fun of it, by ridiculing it, by criticizing it in their own work. All right. Okay, so what else is happening in 18th century? You have, you have John Dryden. Okay, John Dryden, for your syllabus, you have Mac Flecknoe. Okay, so when you're reading Mac Flecknoe, before that, you really need to understand what was the background, what was the backstory of John Dryden, and what was the reason behind writing Mac Flecknoe. Okay, so he was at a constant war with, there was a politician, there was a man named Thomas Shadwell. Okay, he was also a writer. All right, he was also a writer. He was supporting one political party, John Dryden was supporting another political party, and they were completely against each other. So what they will do, John Dryden will ridicule Thomas Shadwell. Thomas Shadwell then he will write another poetry where he will be ridiculing John Dryden. And there were series of satirizes. There were series of satirical poems where both of them, they are just they're just trying to make fun of each other. Okay, so Mac Flecknoe, when I'm telling you again and again, be thorough with your history. Okay, be thorough with your history. Otherwise, let's say that you start reading Mac Flecknoe, you start reading line by line, but then if you do not understand what kind of tone Dryden is using, why is he referring to Thomas Shadwell as a king of dullness, and what was the reason behind all these ridicule, then you won't be able to enjoy the poetry, you won't be able to justify the poetry. All right, so in Mac Flecknoe, what happens? Um, Mac Flecknoe, he is actually Thomas Shadwell. Okay, he is actually Thomas Shadwell, and the father of Mac Flecknoe is Richard Flecknoe. Okay, father of Mac Flecknoe is Richard Flecknoe, and Richard Flecknoe, he is what? He is the king of dullness. Okay, king of dullness. So what happens? Richard Flecknoe says that I should retire right now, and I should retire and I should pass my throne and my position to my son Mac Flecknoe, who is actually Thomas Shadwell. So after Richard Flecknoe, Mac Flecknoe will become the king of the kingdom of dullness. Kingdom of dullness, where the people are stupid, people are dull, and he will be, Mac Flecknoe will be ruling those idiots. He will be ruling those stupid people. Okay. Now, in the coronation, during the coronation, when um, during the coronation, when Mac Flecknoe, he is there, he is sitting on the throne. Richard Flecknoe, he gives Mac Flecknoe some advice, and he says that, you know, you don't have to be smart.
Okay, you don't have to be so smart. You don't have to use your brains. You don't have to use your intellect, because you are very much stupid. You should use your stupidity to run this kingdom. Believe in your stupidity. Okay, believe in your stupidity, believe in your idiotic values, and run this country with the help of your stupidity. Okay, just do not put in your brains. Okay, so what Dryden is doing here, he's time and again he is referring that Thomas Shadwell is nothing but a stupid man in real life. Okay, you have to immediately come back to history. John Dryden is referring Thomas Shadwell as a stupid man. Fine, as a stupid man because he is supporting another political party. He is not supporting the royal family. All right. So we do not have much time to go through the entire poetry. It is on you to read the poetry thoroughly. Again, when you read an 18th century poetry, you really need to focus on the metrical scheme, the rhythmic scheme. Okay, the rhythm, the meters, the composition, the structure, and what kind of literary devices um, is the poet using. If there is any symbolism, okay, is there any symbolism, is there any imagery, and all those things, you really have to understand your history. You got to understand what is the meaning of a satire. Okay, that age was also called the age of satire. Remember, a question can come from here. Okay, and the question may come that discuss John Dryden as a as a poet of satire. Okay, or discuss Alexander Pope as a poet of satire. Okay, so explain the uses of satire in Macfleckno, or explain how John Dryden is satirizing Thomas Shadwell in Macfleckno. So these questions can come up, these questions can pop up any time. Okay, yeah, while writing assignments or while giving your exams. So make sure you just you go through the poem once again, summarizing, just for your answer, summarizing a poetry is not enough. Summarizing any piece of work is not enough. You are, you are literature students. You really need to understand how to read in between the lines, something that others will not be able to recognize. They won't be able to realize. That is something that you will have to analyze and find out in that piece of work. All right, so that is for your mac flip now. So I'll just quickly tell you about Rape of the Lock. This is something I have discussed earlier as well. In Rape of the Lock, again, coming to the history, uh, there was a king, Charles the Second. Okay, there was a king in history. I'm talking about history of England. There was a king, Charles the Second, and what he did, um, when he was in France. Okay, he was in France for some years, and when he came back to England, actually he was banished from his own country. Okay, he was supposed to be the king, Charles the Second. He was supposed to be the king after Charles the First, but the people, they banished him from England, and therefore he was hiding. He was in France for some years, and while he was in France, he discovered, or he enjoyed, the culture of France, where people were pompous, they were always in celebratory mood. Okay, they're always they were always going to parties. Were only they were only focusing on how to get dressed well.
and they were focusing on how to look good, um, and how to cheat on our spouses and all those things. Okay, so Charles the Second, he loved those things. Okay, he loved those things. And when he came back to England, who? Charles II. When he came back to England, he tried to implement all those things to the people of England as well. Okay, he tried to implement all those things into the art that were being produced in England. So from this age, you will see that there were some, if you read um, plays of that time, if you read plays of mm, comedy of manners and all, you will see how people are pompous, how mm, their culture is something different, and they're always going to the parties, they are cheating on their spouses, they're focusing on their own beauty and all those things. Okay, so that was a mindset that people began to have. Okay, in France as well as in England. Okay, there was a shift in attitude of the people, especially the aristocratic people. Okay, especially the aristocratic people. What do you mean by aristocratic people? People who came from the upper class. Okay, people who came from the upper class, the rich people, the wealthy people. Okay, so they had a different kind of attitude towards the life. They had a different take on life. Okay, so now Alexander Pope, he, of course, just like John Dryden, he also ridicules at something that is happening in society, something that is wrong happening in the society. For example, you don't like something about your place, you don't like something about your area, about your locality. So what you do, you write about it. And when you write about it, you write in a humorous way, you write it in a funny way. Okay, and what they used to do, they they used to write something in a humorous way, in a funny way, in a comedic way, so that what will happen, they will be able to ridicule that particular man, they will able to make fun of that particular man. In fact, and with that, the people of England, they will find some kind of entertainment, they will have fun reading that piece of poetry, that piece of work. All right, so what is happening in Rape of the Lock? Alexander Pope, what he is doing? Alexander Pope, he is writing about a woman. He is writing about a woman who is obsessed with her beauty, who is obsessed with her makeup, who is obsessed with her hair. Okay, she's just she's always dreaming about her beauty, and she's always dreaming how people are appreciating her beauty, how people are falling for her, how you know they are just they are being charmed by her beauty. Okay, she's always dreaming of all those things. And that name of the girl is Belinda. And through the attitude of Belinda, Alexander Pope is showing that in that particular time, this is how people, especially women coming from aristocratic family, they were behaving. They were all about their beauty. They were all about their money. They were all about how they were getting dressed, what kind of costumes they were wearing, what kind of fabric they were wearing. Okay, what kind of makeup they were putting on. All right, so all these artificial things, they were all materialistic. Okay, they were into so much of materialism, they believed in artificial things and artificial beauty. So they were losing the touch of life, they were losing all the emotional things out of their life, they were losing all the sentiments. Okay, so this is something Alexander Pope is highlighting in this poetry. Okay, and
Belinda, as a character, she is representing all those women who are obsessed with their beauty. All right. So, what is happening? Now, Belinda, she's a character who is representing all those women who are coming from, you know, who are coming from all the upper class society, who are coming from wealthy families. They have nothing else to do. They are cheating on their husbands. Some husbands are cheating on their wife. They are only focused on their beauty, how to maintain themselves, how to walk, how to sit, how to sing. Okay, so this is something the people were obsessed about. And Belinda, she is a clear picture. She is a perfect portrayal of women during those times. This is how Alexander Pope has Alexander Pope has depicted Belinda. Now Belinda is surrounded by so many angels. Okay, now you will see gods and angels, all these things, they're coming from classical literature, they're coming from ancient literature. And as I told you that all these poets, 18th century poets, they also tried to imitate classical figures or classical writers. So you will see that what Alexander Pope is doing here, he is bringing in that classical touch with and fusing it with the current society, with the current scenario. All right. So he's, portraying a woman who is materialistic, who is into artificial beauty, who is into outer beauty, and at the same time, he is also giving an account of, he's also um, depicting an angel. Okay, there are actually many more angels in this poetry, but then there is one angel, Ariel. Okay, she is like the guardian spirit of Belinda. Okay, she's the guardian spirit of Belinda, and she is just taking care of Belinda. She's trying to um, warn her that you should be careful, and people might just go against you sometime. People might just rob you of some things that you have. Okay, but Belinda, she is so obsessed with herself, she is so self-centered that she doesn't pay any heed to the warnings of Ariel. All right, so this is something that is happening throughout. mm, okay, just a second. Okay, Sarita, what is it that you are not able to understand? You're studying 17th and 18th century poetry, right? Understand, but ma'am, I have some problems, so I do not join फर्स्ट क्लास से लेके मतलब ये क्लास तक मैं ज्वाइन नहीं की थी, इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है मुझे. Acha, suno. See, I won't be able to repeat everything right now. Like, for example, if you haven't joined the previous classes, then I would recommend you to buy a history book, go through the history. Okay, then you will be able to understand all the details. ठीक है, अगर टाइम होता तो मैं करवा देती, हिस्ट्री भी करवा देती, बट वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, राइट? और हिस्ट्री इज वेरी वास्ट. ठीक है, गेट अ बुक. ठीक है, फॉर स्टार्टर्स, सिंस यू गाइस आर बिगिनर्स, गेट अ बुक बाय विलियम जे लॉन्ग. ठीक है, हिस्ट्री बुक खरीदना विलियम जे लॉन्ग का. द लैंग्वेज इज रियली इजी. Okay, the language is really easy. Okay, other than William J. Long, you have Routledge, you have David Digest. You know, and when you study history, जब आप history पढ़ रहे हो, you will understand how the things are taking place and how the things are reflecting in the works of different writers. उनके
राइटर्स की क्रिएटिविटी में भी वो दिखता है, ठीक है, द हिस्ट्री. So since you were not there in the last class, I मैडम वो won't be able to repeat. Yes, मैडम वो दूसरा Sarita, बुक are you? खरीदना पड़ेगा. हेलो Hmm. हेलो You have, yes. Hello. See, मैडम, आप you जो have बुक Rutledge. पढ़ रहे हो वो BEGC 107 का है ना, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा का. हाँ. So this is for your seven, right? BGC 107 का क्लास ही चल रहा है ना? हाँ, यस मैम. Yes. तो So आप see, यूनिट 2 का देखो, भी. हाँ. see for any unit, like what I'm हम्म, trying to say, आप प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करो. What I'm trying to say, हम्म, in literature आप कोई भी यूनिट पढ़ो, be it हम्म, 16th century literature, be it 17th century, be it 18, 19, 20, 21st, जो भी century, start with history, ठीक है, and go हम्म, through your syllabus. Okay, go through your syllabus. Syllabus में क्या है, right? And when for example there are series of topics, बहुत सारे topics हैं, pick one topic, ठीक है, उस topic के बारे में उसका background study थोड़ा करो. Alright, just go through the backdrop, what is happening, okay, what is happening, what the writer is talking about, ठीक है, and यस you know, मैम, आई just अंडरस्टैंड. yes, what the writer is talking about, what has happened during that time in England. Okay, what is the history behind this writing? What was the political scenario when this particular work was being written? Make sure when you read a poetry or when you are reading a novel or anything, just remember. For example, let's take for let's take an example. You are reading a 19th century novel. ठीक है, आप एक 19th century का novel पढ़ रहे हो. Let's say that you are reading Charles Dickens, right? When Charles Dickens was writing, he was writing what was happening in the society. तो आप ना वो चीज रिलेट करोगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव okay, let's say you have Lycidas, or let's say you are reading about John Milton, then you will have to understand that John Milton, he came from a time when people were very much religious, and he also wrote a religion thing or a religious Yes, thing. ma'am, I understand. This is an introduction for him. Yes, see, this is an introduction, and this is something that will go through, this will something that will go on even while you are reading a work. ठीक है. So in order Yes, to, if you want to understand a piece of literature better, then start with the history, and then yes, come ma'am. to the come to the topic. And when you are reading a topic, for example, you are reading a novel, आप एक नॉवल पढ़ रहे हो या फिर आप एक पोइट्री पढ़ रहे हो या फिर आप एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, मेक श्योर उसका जो टाइटल है, यू Yes, नीड ma'am. टू लर्न द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल. ऊपर का जो टाइटल होता है ना, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई Yes, ma'am. हैज राइटर गिवन दैट particular title, what is the reason behind, what is the significance, okay, what is the significance of that title. And let's say for example there are some characters in a poetry, ठीक है, there are some Mm-hmm. characters, जैसे कि मैक फ्लेक्नो में रिचर्ड फ्लेक्नो is a character, मैक फ्लेक्नो is a character, and there is a setting. What is the setting? The kingdom of dullness. तो इन सब के बारे में you have to study. What is a kingdom of dullness? Why is John Dryden calling it the kingdom of dullness? Okay, and why John Dryden he has given the name of Macflecknoe to Thomas Shadwell? What was the history of, what was the history behind, sorry, between John Dryden and Thomas Shadwell?
Okay, and in how many lines, okay, in how many paragraphs, in how many lines is he ridiculing it? Sat, he is using satire, and what intensity he is ridiculing that man. किस तरह का सटायर यूज किया गया है, कितने लाइंस में, वाई इज ही कॉलिंग हिम by some names. Okay, and there are some particular instances. Okay, you will get some particular instances which will make you clear that to what extent John Dryden has depicted his stupidity. Okay, like for example, uh, when Mac Flecknoe is coming to the throne, when Mac Flecknoe is, he's having his coronation, you will see that the place, जिस जगह पे उसका coronation हो रहा था, that place is absolutely unhygienic. That place is somewhere a king will never sit. Okay, so you will find these instances in this poetry. Okay, make sure you note down these instances. And let me tell you that if you haven't started making notes, start making notes from now on. Yes, अभी ma'am. से notes बनाना शुरू करो. Yes, because in the last minute, when you have your exams or you need to submit your assignments, and if you have not started earlier, then you are going to face problems, because in your exams Yeah, you know you are you right. will be asked to write long questions, long question and answers, right? And let's say you have a question of 16 marks or 20 marks, so you will have to write an answer for 4 to 5 pages, and you will be given a particular time. ठीक है, like एक 3 घंटे का टाइम दिया होगा या 2 घंटे का टाइम दिया होगा, जितना भी टाइम दिया होगा, so you will Because have of to this write an problem, answer. Sorry. because of this problem, I मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ मैं ये सब चीज़ के लिए। मतलब सडनली मैं इंग्लिश मीडियम टोटल इंग्लिश ऑनर्स का बहुत हार्ड हो रहा है, वो जो जितना भी कोर्स है, तो बहुत प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को। See, don't worry. I can understand. Even I have met some students who face such problems. In वो भी इस तरह के problems face कर रहे हैं. But just don't be underconfident. ठीक है. इतना problems ठीक है. Problems face करेंगे. इनफैक्ट अच्छे अच्छे लोग भी प्रॉब्लम फेस करेंगे while they're reading literature. Don't be so underconfident. Just believe in yourself. अभी से हिस्ट्री पढ़ना शुरू करो. Let's say for example you're not able to read you know um too much of hi-fi English. Start with a book that has simple English. I can recommend William J. Long, Edward Albert. इनका English काफी very बहुत ही simple है. ठीक है, so you can Yes, ma'am. start reading all these books, and you can refer to, there are so many websites and so many things that you can refer to. They can help you out. And I'm telling you, when you are writing an answer, जब हम आंसर लिख रहे हो ना, make sure to keep the answer simple. ठीक है, आंसर सिंपल रखना, सिंपल इंग्लिश में लिखना, but to the point लिखना. Your introduction and your conclusion, introduction and conclusion should be really nice. ठीक है, focus on your introduction and conclusion. बाकी when you're writing an answer, keep it as simple as possible, as simple as possible. ज़्यादा over complicate करने की ज़रूरत नहीं है, right? And Yes, ma'am. when you are studying, let's say you are doing a self study, ठीक है, for example you are reading a poetry or you're reading something and you're referring to some book or to some internet website for your own reference. तो आप जब references ले रहे हो ना, just jot down the points and अभी से notes बनाना शुरू करो. And I'm stressing on making notes from now on because there is a reason. जैसे कि आप लोगों का एग्जाम आएगा, you will have your exam. Okay, you will be given so many long question and answers to write.
ठीक है, आप लोगों को बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स दिया जाएगा और आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा. सो इफ यू आर acquainted with writing or if you are acquainted with making notes, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उस क्वेश्चन के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स एलिमिनेट करने हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, आप तभी कर पाओगे अगर आपको पहले से इस बात का प्रैक्टिस होगा. कितने टाइम में आप कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो, right? Let's say for example you have only half an hour or you have only 25 minutes, 20 minutes or 25 minutes in your hand to write a 5-page answer. Yes, are you asking Yes, something? ma'am. Okay, let's say you have 20 minutes or 25 minutes in your hand to write a 5-page answer. ठीक है, इतना कुछ लिखना है, टाइम बहुत कम है, तो व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू कैन राइट. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद करो, उसको अपनी वर्ड में एक्सप्लेन, उसको अपनी सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करो. ओके, यू डोंट हैव टू ओवर कॉम्प्लिकेट इट, राइट? एंड व्हाट एल्स, कोशिश करो टू राइट योर आंसर्स लिटिल फास्टर सो दैट यू विल गेट सम टाइम टू रिवाइज योर आंसर्स. ठीक है, Yes. but Yes, ma'am. before that, yes, before that, just start making notes बनाना अभी से शुरू करो. Get your history book. I thought, see, you are in second year, right? I thought that Yes, ma'am. you must have heard, आपके पास ऑलरेडी हिस्ट्री बुक होगा और आप पढ़ना शुरू भी कर चुके होंगे फर्स्ट ईयर से बोला जाता है हिस्ट्री बुक लाने के लिए. ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो अभी से भी आप शुरू कर सकती हो. एंड you don't have to be so अंडर कॉन्फिडेंट. ठीक है, अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट भी मत करो. इवन अच्छे अच्छे लोग भी, इवन दे फेस प्रॉब्लम, सो यू डोंट हैव टू वरी. अभी से थोड़ा शुरू करो, देन you will certainly find a way out. Okay, you will find a time when things will be very simple for you. All right. यस मैम. और मैडम, ये जो हिस्ट्री बुक जो आप लाने के लिए बोल रही है, उसका नाम क्या है? मतलब वो बुक. Okay, so you have one history book by William J. Long, History of English Literature by William J. Long. ठीक है, मैं ये राइटर्स का नाम बोल रही हूँ. एक है विलियम जे लॉन्ग, ठीक है, उनका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. देन यू हैव हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एंड्रयू सैंडर्स. ओके, एंड्रयू. then Andrew Sanders. All right. Then you यस have मैम. history of English literature by history of English literature by David Dyches. डेविड Okay, डाइजिस. David Dyches. Just a second, I'm writing it डाइजिस. down. History of, just a second. History of English literature by David Dyches. Okay. So David Dyches, when you get books of David Dyches, जब आप David Dyches के books जब ला रहे हो, you will see that there are 4 volumes of this particular history. 4 volumes में उसका history divide हुआ है. ठीक है. Then you can just take down the books that I'm recommending. यस मैम. थैंक यू मैम. Sure, not a problem. Okay. Then you have मैम William ये J. Long. Yes. मैम, ये जो क्लासेस है ना, ये कितना दिन तक चलेगा? मतलब I think मीन्स आज आखिरी दिन था. Yes, आज आखिरी दिन था. Actually, I was little unaware of the timetable. I wasn't sure, but I'm there. Like, if you find any doubts, if you have any doubts, then you can ask me, right? कुछ भी अगर डाउट हुआ, you can ask me. ठीक है? मैम Then आपका you तो have William. नंबर मिल सकता है No, आपका? I'm कुछ there in the प्रॉब्लम? group. I'm there in the group.
लेकिन मैडम ग्रुप का कुछ भी मतलब मेरे पास ये नहीं है मैसेज, मुझे कुछ मिल सकता है वो डिटेल्स मेरे पास कुछ भी नहीं आता है ना। Why are you not there in the group? आप ग्रुप में नहीं हो? नहीं मैडम। आप मैडम फिर जब तो बात। मैडम जब फर्स्ट ईयर में क्लास चल रहा था ना, उस टाइम पे मेरा कुछ प्रॉब्लम था और क्लासेस भी कनेक्ट नहीं हो पाई मैंने। तो फिर कोरोना आ गया, बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो इस तो सेकेंड ईयर फिर में आप जब किसी से। आया, हाँ। बस खाली ये यूट्यूब में से और जो टेलीग्राम चैनल में जो आता है वो सब देख देख के मैं पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मेरे पास और डिटेल कुछ भी नहीं था। तो फिर आप किसी से बात करो कि आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाए। ठीक है। मतलब See, I've given कॉलेज। my number in the chat box. You just ask someone to um, to join you from in the group. आपको ज्वाइन करवाया जाए उस ग्रुप में। और आपको सारा नोटिफिकेशन वहीं पे जाएगा, राइट? उस यस व्हाट्सएप मैम, ग्रुप कुछ पे। नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आता है, अच्छा। ओके तो ओके मुझे ओके। कुछ या भी डिटेल दिस। नहीं मिल पा रहा है ना। ओके, डोंट वरी, हो जाएगा। जस्ट हैव लिटिल पेशेंस। मैम वो सेंटर मेरा कॉलेज जिधर एडमिशन हुई थी मैं, उधर कुछ बात करना पड़ेगा क्या ग्रुप में ऐड होने के लिए, या हाँ, बात करो, टॉक टू द ऑथोरिटीज। और मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या करना होगा, बट किसी से आप बात करके देखो, ठीक है? एक्चुअली आई यस एम नॉट मैम। श्योर, राइट? सो आई हैव गिवन यू द नेम ऑफ द बुक्स। ठीक है, बुक के सारे नाम मैंने कुछ कुछ नाम मैंने दिए हैं। आप उन बुक्स को थोड़ा रेफर करो, ठीक है? बिकॉज यू आर बिगिनर्स, सो आई एम रिकमेंडिंग दीज बुक्स। अदरवाइज और भी कुछ बुक्स हैं, इट माइट बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, बट यू कैन रेफर टू दीज बुक्स, ओके, एज ऑफ नाउ। ठीक है। ओके ऑल राइट। ओके मैम। सो लेट्स कॉल इट अ डे, ओके? आज के लिए बस इतना ही, राइट? So yeah, I mean, if you guys have any doubt, then you can contact me, right? मैडम मेरा एक ओके डाउट है। Okay. हाँ हाँ, yes. मैडम ये जो मैं गुल्ली बाबा का सीबीसीएस इग्नू का गुल्ली बाबा का रेफर कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो क्या वो सही बुक है रेफर करने के लिए? क्या? What? Who, Baba? What? I've never heard of that name. नहीं, वो अमेज़न से मैंने देखा वो बुक जो हमारे मतलब जो मतलब हमारे जो सब्जेक्ट कोड है वहाँ पे मार के देखने से टाइप करके देखने से वो जो बुक आ रहा है उसमें से मैंने एक दो बुक मंगाया था और उसको मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन आंसर रेफर करने के लिए, तो क्या वो सही बुक होगा? उस बुक्स के नाम क्या है? उस बुक्स का ये बुक्स के। इग्नू सीबीसीएस गुली बाबा ये पब्लिकेशन। ओह नो, वो मुझे नहीं पता। वो शायद आपका शायद स्टडी मटेरियल्स होगा, राइट? स्टडी मटेरियल्स होगा, जो कि नहीं मैंने वो आज तक जस्ट देखा नहीं है, सो। वो खाली ठीक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में है तो आप देखो वहां पे किस तरह से आंसर लिखा गया है, किस फॉर्मेट में आंसर लिखा गया है। शायद उसमें भी आपको हेल्प मिल सकता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज क्वेश्चन आंसर्स तो बहुत बाद में आता है। आप पहले बुक्स खरीद के पढ़ो, ठीक है? Let's say for example you have Macfleckno, or you have Rape of the Lock, or you have something else, तो उसका मेन टेक्स्ट पढ़ो, ठीक है? आप मेन टेक्स्ट पढ़ोगे और ये सारा जो बुक्स है ना, वहां पे कुछ क्वेश्चंस दिया गया होगा, तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, फिर इस तरह का क्वेश्चन शायद आ सकता है एग्जाम में, ठीक है? आप वो मैडम क्वेश्चंस रेफर करो। हम्म। हमारे जो इंस्टीट्यूट के तरफ से जो बुक इशू हुआ है इग्नू की तरफ से उस वो तो मेरे पास आ चुका है, बस उसको देख के मैं नोट्स बना रहा हूँ और उसको उस रेफरेंस बुक के साथ टैली करके देख रहा हूँ बस। थोड़ा थोड़ा कहीं ठीक कहीं है, मैच हो रहा है।
ओके, गुड गुड गुड। अगर स्टडी मटेरियल्स हैं आपके पास, अगर मिल चुका है, देन स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स, पढ़ाई शुरू करो। बट बिफोर एनीथिंग, बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन आंसर्स या फिर कुछ भी ये होने से पहले आप मेन टेक्स्ट पढ़ो। ठीक है, मैं जी इससे ज्यादा और कितना मैं स्ट्रेस करके बोलूं, आई एम पता नहीं चल रहा है, बट जस्ट फोकस ऑन योर टेक्स्ट बुक्स। आप टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ो, फिर आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए आप सारा रेफरेंसेस ले सकते हो, वो स्टडी मटेरियल से हो या कहीं और से हो, ठीक है। बट आप टेक्स्ट बुक पढ़ो। सी, यू आर लिटरेचर स्टूडेंट्स नाउ, और लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए एक किताब कितना इम्पोर्टेंट होता है, यू शुड नो दैट, राइट। इधर आप पीडीएफ डाउनलोड करो या फिर बुक खरीदो। अगर बुक खरीदने में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो पीडीएफ से करो, आजकल हर चीज का पीडीएफ आता है, ठीक मतलब है। एंड यस, पीडीएफ के फॉर्म में भी है, बुक के फॉर्म में भी वही सेम है। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर बुक्स नहीं खरीद रहे हो तो पीडीएफ पढ़ो। पीडीएफ नहीं पढ़ सकते, बहुत लोग फोन या लैपटॉप में नहीं पढ़ सकते, तो ये यू कैन ऑलवेज, मैं तो बोलूंगी कि बुक्स खरीद के पढ़ो, या फिर बुक्स सेकंड हैंड खरीद के पढ़ो, या फिर किसी से बोरो करके पढ़ो, या गो टू द लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी से बुक्स इशू करके पढ़ो। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज, बट बुक्स पढ़ो, ठीक है। बुक्स पढ़ने का आदत बनाओ। यू गाइस आर लिटरेचर स्टूडेंट्स, मेन टेक्स्ट पढ़ो। एंड लेट मी टेल यू, देयर इज नो शॉर्टकट, ठीक है। समरी हेलो कहीं मैम। से पढ़ के, यस, मैम, आप मुझे ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर मैम, सर। नहीं कर आपको जान पहचान कुछ भी? अब थोड़ा सर से पूछ, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, मैं करवा सकती हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, दिस इज नॉट इन माई हैंड एक्चुअली, ओके मैम, ठीक है। ठीक है। तो ठीक आप है, उधर थोड़ा बात सर से करते हैं बात तो कीजिए, जो आपकी, स्टडी सेंटर जो है हाँ आप उधर बात बात कर, करते हैं। ओके मैडम। ओके ओके। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, सिर्फ समरी करके लिख के कोई फायदा नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि किताब कौन पढ़ेगा, बस समरी पढ़ लेते हैं, ये करके कर लेते हैं, देन दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज समरी में बहुत सारी चीजें नहीं बोला जाता। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक पोइट्री का अगर फिगरेटिव कहाँ पे सिमिली दिया गया है, कहाँ पे मेटाफर दिया गया है, कहाँ पे इमेजरी है, कहाँ पे सिंबोलिज्म है, कहाँ पे सिनेक्डकी है, कहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, ये आपको समरी में नहीं मिलेगा, ठीक है। देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू विल नॉट फाइंड इन समरी, इसीलिए टेक्स्ट बुक पढ़ो, ठीक है। नोट्स अगर नहीं बना रहे हो तो नोट्स बनाना शुरू कर दो। फोकस ऑन द टाइटल, फोकस ऑन द मेन कैरेक्टर्स, द मेन प्लॉट, राइट। सारे थीम्स पे फोकस करो, ठीक है। ये हर चीज पे फोकस करके यू स्टार्ट रीडिंग एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स। लास्ट मिनट के लिए कुछ भी मत रखो, लास्ट मिनट के लिए डोंट कीप एनीथिंग टिल द लास्ट मिनट, यस, ठीक है। समझ में आया सबको? मैम। शुभम, सरिता, yes. यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। So if you guys have any doubt, then you can contact me. All right, you can contact me. I am in that group. Yes. So that is all for today. All right. All the best. आप सबको अच्छे से हेलो पढ़ाई करना, हाँ। हेलो Yes. हेलो Yeah. शुभम Sarita, जी, you saying आप मेरे something? को ये मैं सरिता का हस्बैंड बोल रहा हूँ। Okay. एक्चुअली शुभम जी, आप सरिता को ऐड कर सकते हैं क्या ग्रुप में? मैं अपना हेलो शुभम नंबर जी। शेयर कर देता हूँ। हाँ, नंबर शेयर कर देता हूँ इसी के मैसेज बॉक्स में। अगर हो सके तो आप ऐड करके मुझे जो सकते हो अपने आप को। अच्छा, मैं मैसेज बॉक्स में ये भेज रहा हूँ लोकेशन? मेरा नाम। मैं भंजनगर से बोल रहा हूँ, उड़ीसा। मैं कहाँ से? मैसेज बॉक्स में मैं मैसेज बॉक्स में अपना नंबर आपको लिख के भेज रहा हूँ। ये मैसेज बॉक्स में अभी एक नोटिफिकेशन आएगा। ये अगर आप उसको नोट कर दीजिए और ऐड ज्वाइन ग्रुप करके व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लीजिए अपने आप को।
ठीक है, मैं भेज रहा ओके हूँ। ओके। योर लोकेशन? Okay, thank you. एक नंबर आया होगा, Sarita, वो मेरा did है। you get the number? Yes, ma'am. Okay, okay, all right. उसमें So यस मैम। you communicate. ठीक है, Sarita, you can just text him or you can, contact him. ठीक है, आप लोग Yes, ma'am. communicate करो. All the best for your semester. अच्छे से करना. Okay. And I think this was the last class for this semester. All right. So, मैडम and अभी of तक course, हम लोगों ने lastly, हाँ. मैडम First अभी year तक का हम तो लोगों ने अभी अपना तक फर्स्ट एग्जाम नहीं सेमेस्टर हुआ। दिया नहीं है, और अभी बोल रहे हैं कि जनवरी फरवरी के बीच में हमारा एग्जाम होगा। तो वो फर्स्ट ईयर का जो है वो भी करना है, और अभी सेकंड ईयर का जो वो मतलब एक साथ ही लगभग करना है, एक ही टाइम में। आप क्योंकि इस 2 सेमेस्टर्स का एक साथ एग्जाम दे रहे हो? यस मैडम मैडम, अभी तक फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर का का एग्जाम ही नहीं हुआ है। एग्जाम हुआ नहीं है। तो वो जो एग्जाम होने वाला था जून जुलाई में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से हो नहीं पाया। तो अभी अगस्त सितंबर में होना था, वो भी डिले हो गया। और उसके बाद अभी जनवरी और हाँ जनवरी और फरवरी के बीच में जनवरी फरवरी में होने होने वाला वाला है है। ऐसा अगर बोल ये रहे हो हैं। गया तो फर्स्ट सेमेस्टर होगा, और सेकंड सेमेस्टर जो है वो जून जुलाई के करीब होगा। मतलब बहुत कम टाइम बच गया है, 2 साल का। मतलब अभी 5-6 महीने के अंदर ही देना है, एक टाइप से कहने को बोले तो। ओके। मैडम ये फर्स्ट ईयर का होगा कि नहीं ये भी कंफ्यूजन है। अरे, आई कैन अंडरस्टैंड। ये अभी बहुत ज्यादा ये हो गया है, मतलब क्या बोलूं सब कम टाइम में सब कुछ खत्म करना पड़ रहा है। बट आप थोड़ा फर्स्ट सेम का शिफ्ट तो शायद हो गया होगा, क्लासेस एंड एवरीथिंग, राइट? आप अगर क्लासेस हमारा टोटली हुआ नहीं है। नहीं हुआ है शायद। आपको कुछ आइडिया है कि क्या कैसे क्या करना है एंड ऑल? डू यू हैव एनी आइडिया और नॉट? जब हम अपने इंस्टीट्यूट पूछते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मतलब हो जाए, 1 साल का एक ही साथ होता है। मैं पूछा अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होना चाहिए। वो लोग बोल रहे हैं नहीं, दोनों सेम 1 और सेम 2 दोनों फर्स्ट ईयर मतलब एक साथ ही होगा। तो वो तो करना है ही है अभी जनवरी फरवरी में। और ये जो थर्ड और फोर्थ है जो कि सेकंड ईयर का, वो भी जून जुलाई में करना है। ओके। मतलब वो भी पढ़ना है, रिवाइज करना है, और प्लस ये भी स्टार्टिंग से पढ़ के रिवाइज करके अच्छा। एग्जाम देना है। मतलब बर्डन ओके डबल ओके ओके ओके। 4x हो गया है। ऑल राइट, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। आई मीन देयर इज नथिंग आई कैन डू, बट इतना बोल सकती हूँ कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, अगर कुछ डाउट्स हो, देन यू कैन कांटेक्ट मी। ठीक है? मैडम एंड आप ड्यू किस टू कॉलेज में लिमिटेड टाइम, प्रोफेसर हैं? मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, आई एम गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट लेक्चरर हूँ एट इकामरा कॉलेज। ठीक है? एंड वो उड़ीसा में है द ना? प्रॉब्लम इज, हाँ हाँ, भुवनेश्वर में ही है। अच्छा। एंड बट द प्रॉब्लम इज कि टाइम इतना कम है दैट आई कुडंट टेक योर क्लास, इवन आई हैड माय कॉलेज टुडे। इसलिए मैं आपका पहला दो क्लासेस भी मैं नहीं ले पाई, क्योंकि मैं घर इतना लेट आई एंड आई वाज रियली टायर्ड टू एंगेज इन क्लास। स्टिल बैठ के ठीक है एक क्लास ले लिया। ठीक है, दैट्स नॉट अ अभी प्रॉब्लम। हमारे जो बाकी बाकी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनको शायद पता ही नहीं, क्योंकि 8-10 लोग हैं, उनको शायद पता ही नहीं है कि अभी क्लास चल रहा है। क्योंकि आपने एक लड़की ने आपको फोन किया था, आपने कहा था टोटली आज क्लास नहीं होगा, तो इसलिए कोई भी ज्वाइन नहीं किया। ये जो सरिता आई है ये नहीं आई है, और मैं जस्ट देख रहा था ऐसे ही अच्छा। कि शायद आप ज्वाइन हुए होंगे कि कोई ज्वाइन हुआ होगा। टेस्ट करते करते जस्ट ज्वाइन हुए थे, तो मैं ज्वाइन हो गया। आप हाँ 6 बजे से ज्वाइन हुई ना मैडम? हाँ यस यस। हाँ, सी एक्चुअली जो आज मैंने बोला, मतलब जो भी मैंने पढ़ाया, मैंने इसको प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने डिस्कस कर दिया था। ओके, जी जी डिस्कस जी। कर दिया था। एंड आई थिंक यू वर देयर इन द क्लास, शुभम। हाँ मैं दोनों क्लास में था,
लेकिन आज हाँ जो है वो मैं 4 PM का जो क्लास हुआ था वो उसमें मैं ज्वाइन हुआ था, लेकिन किसी लड़की ने आपको, आरती नाम की कोई लड़की ने आपको कांटेक्ट हाँ किया हाँ होगा हाँ शायद। तो आपने कहा था नहीं आज क्लास हाँ में टोटली नहीं करूंगी, शायद ऐसा कुछ कहा था, मुझे क्लियरली पता नहीं है। तो मैं फिर हाँ डिस्कनेक्ट कर गया। उसके बाद 5 बजे देखा तो कोई नहीं था, और अभी 6 6 बज के 20 मिनट में देखा तो ये एक ज्वाइनिंग हुआ था, तो मैं ज्वाइन कर लिया खुद को। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं वैसे भी आई वॉज इन कॉलेज एट दैट टाइम। ठीक है, आई वॉज इन कॉलेज एट दैट टाइम और मैं ले भी नहीं लिख पाती। ठीक है, एंड इवन आई डिडंट नो कि मुझे ये वाला भी लेना है, बट ठीक है मैं ले लिया मैंने। बट द पॉइंट इज कि आज जो भी पढ़ाई हुआ है वो पहले मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दिया है आपको, कैसे अप्रोच लेना है, क्या क्या देखना है एंड ऑल। ठीक है, so even after that if you have some doubts of course you can contact me। ठीक है, contact number है and all। मेरा आप ये लाइन मेरा बाय। एक छोटा सा डाउट है मैडम। जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं हमारे सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, जो भी मतलब एक फेज ऐसा होता है लेसन में जहाँ पे पोएट के बारे में बोला जाता है। मैं जनरली इन रफली बोल रहा हूँ, पोएट के बारे हम्म में या जो नॉवेल का राइटर होता है उसके बारे में दिया हुआ होता है, मतलब उसका काम, उसके वो जो कैरेक्टराइजेशन करता है या जो बाकी सब चीजें वो दिया होता है। हम्म और फिर सेकंड फेज में लेसन दिया, मतलब हम्म वो जो स्टोरी होता है जो लिखा होता है वो दिया होता है। तो मैडम हमें कौन हम्म। से इन दोनों में से कौन सा हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा? एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है, पोएट के बारे में या स्टोरी के बारे में? ज्यादातर मुझे जितना लग रहा है, मैं तो इग्नू के क्वेश्चन पैटर्न से आई एम नॉट एक्वेंटेड, लेकिन अच्छा। मुझे अगर पर्सनली पूछा जाए तो मैं अपना ओपिनियन अगर दूं तो यस, राइटर के बारे में आपको फोकस करना है, लेकिन उससे ज्यादा उसने क्या लिखा है और उसके राइटिंग में क्या कंटेंट है, किस किस्म का कंटेंट है, आपको उस पे फोकस करना है ज्यादा। राइटर के ठीक बारे है। में यस आपको फोकस करना है, बिकॉज आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, राइटर के बारे में तो पढ़ना ही है। और राइटर के बारे में आप तभी ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे जब आप हिस्ट्री कर रहे हो। ठीक है, बट क्वेश्चंस like I don't have any idea about questions coming from IGNOU। इसमें लेकिन आपका ज्यादातर तो सिलेबस में एक एक काम को लेके है ना, जैसे कि आपका ऑल माय सन्स और एलिस एडवेंचर्स इन सॉरी हाँ लुकिंग थ्रू द ग्लास, वो सब है ना। तो उस बुक में क्या है एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाट आर द थीम्स, जैसे कि गेम ऑफ कार्ड्स या फिर द क्वीन एंड एवरीथिंग, वो सब आप देखो। राइटर के बारे में पढ़ना है, बट द पॉइंट इज क्वेश्चंस ऐसे, जहां तक मुझे पता है आपके ऑनर्स में सिर्फ राइटर के बारे में क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आते हैं। आई डोंट नहीं, थिंक दैट। मैं मेजोरिटी में पूछ रहा हूँ, मतलब जैसे कि कोई क्रिटिक्स ने किसी राइटर के बारे में कुछ बोला है, वहां पे एक लंबा हम्म मतलब 5 6 पेजेस का होगा वो, मतलब इस टाइप का मैं रफली बोल रहा हूँ, उतना मुझे याद नहीं है। लेकिन पहला पेज जो इंट्रोडक्शन होता है वो पोइट के बारे में ही होता है, उसके साथी पोइट्स जो होते हैं उनके बारे में भी होता है, उस टाइप के जो लेखक हैं जो उस टाइप के लिखते हैं उनके बारे में भी होता है, प्लस क्रिटिक्स ने जो बोला था वो उनके बारे में उस पेज में जाता है। लेकिन उसके बाद जो लेसन का जो पार्ट आता है, जो एक्चुअल में स्टोरी होता है जो उस राइटर ने लिखा होता है, हम्म उसको उस पे हमें क्या ज्यादा हम्म। फोकस करना है कि नहीं, वही पूछ रहा था। देखो आप इस केस में आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि आप एक राइटर के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने जॉन ड्राइडन के बारे में बोला। तो आप ना जब आप पढ़ रहे हो, जब आप खुद पढ़ रहे हो, एग्जाम छोड़ दो, असाइनमेंट छोड़ दो, जब आप खुद पढ़ रहे हो तब उस राइटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना। ठीक है, और उस राइटर का राइटिंग स्टाइल क्या है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स है जो वो अपने राइटिंग्स में ऐड करता है, उसके बारे में पढ़ो। ठीक है, वो राइटर मतलब कौन से एज का वो राइटर है। ठीक है, क्या क्या उसके खुद के एलिमेंट्स है उसके राइटिंग में, वो क्या क्या डालता है, क्या क्या इग्नोर करता है, वो सारी चीजें। एंड देन व्हाट आर द थिंग्स दैट ही हैज ऑलरेडी रिटन, और क्या क्या बुक्स लिखा गया है। फिर उसके बाद गो टू द मेन कंटेंट। ठीक है, मेन जो चैप्टर है, मेन जो पोइट्री है या जो नॉवेल है,
तो आपको इससे क्या होगा ना, आपको वो पोइट्री पढ़ते वक्त जैसे कि मैकफ्लेक्नो, आपको वो पढ़ते वक्त ना थोड़ा इजी होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि चलो जॉन ड्राइडन इस किस्म का लिखता है, तो यही सेंस उसने इस पोइट्री में भी डाला है। ठीक है, तो उस सेंस में राइटर को पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके राइटिंग स्टाइल को जानने के लिए, उसके टेक्निक को जानने के लिए। Yes, समझ में आया और इज इट कंफ्यूजिंग? yes, नो नो, क्योंकि पहले पार्ट में ही वो राइटर के बारे में दिया होता है, वो किस स्टाइल में लिखता है, उसने क्या क्या अपने लाइफ में क्या वर्क्स किए हैं नहीं किए हैं, वो सारा पहले दिया होता है पहले फेज में। सेकंड फेज में उसके जो राइटिंग्स है उसके बारे में बताया हुआ होता है। हाँ, इसलिए मैं जस्ट पूछ रहा था कि किस पे ज्यादा फोकस करना है। डाउट क्लियर हो गया ना? हो गया क्लियर? चलो, आई एम Yes, ग्लैड कि क्लियर हो गया। यस सरिता, इज देयर एनी मोर क्वेश्चन? और कुछ नो मैम। पूछना है? ठीक है, मैम कुछ प्रॉब्लम एंड होगा तो मैं आपको कांटेक्ट कर दूंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एंड इवन विद द अदर स्टूडेंट्स, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा देन यू गाइस कैन आस्क मी। बस हाँ, मैं आज क्लास नहीं लेने वाली थी क्योंकि मैंने घर भी नहीं पहुंचा था मैंने तब तक, बट नेवरदलेस ठीक है, कोई बात नहीं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग, क्या क्या इम्पोर्टेंट है क्या क्या नहीं है, मैं ऑलरेडी वो बात कर चुकी हूँ। इवन आफ्टर दैट इफ यू गाइस हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। यस, यस yes, मैम। ma'am. ठीक है, चलो फिर ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा करना। अभी आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग। ओके, Yes, ma'am. आगे ऑल राइट, ओके, थैंक यू, बाय।